say first one is this, a one-to-one relationship, and then one-to-many relationship, or many-to-one relationship, and then many-to-many relationship. So these three relationship we will be discussing. Okay, so for that what we have to do, we have to open a open office base. Okay, so I have already opened open office database. So that is open office base. So database, you have to click on database component. So click on database component, and we have already created database. So what you can do, two options are there: create a new database, and another one is open an existing database file. So you have to click on this one. Okay, because database is already present, so you have to click on that, and then simply click on open or finish, whatever you want. So right now we have opened our database, and the name of the database is MyDB. Okay, MyDB is the database. So that is what we are going to work with. Okay, and once you have opened the your database, in the left pane you can see what different options are there: table, queries, forms, and reports. So we already know how to create tables. So in what different way we can create tables? So tables can be created using design view, and tables can be created using wizard. So both the way we have seen how to create tables: creating table using wizard, creating table in design view. Okay, so you should be able to create table. Okay, so that we have already discussed, how to create table, and then how to insert data in the table, how to enter data in the table, that we have seen. Okay, then how to modify the data, how to delete a record from the table, everything we have done in the last class. Okay, so now it is turn to learn about how to create relationship. Okay, so how to create relationship, that is what we are going to see today. Okay, so for that, creating relationship, so relationship, it can be created between tables. A relationship can be created between tables. Okay, so for that you should have tables, you should already have tables created with you. Tables must be there with you. Then only what you can do, you can create relationship between these those tables. Okay, so suppose first of all we will learn how to create one-to-one relationship. Okay, so for one-to-one relationship, what are the requirement? For one-to-one relationship, what are the requirement? That is what I am going to show you. Okay, so first of all, you should have tables. And how one-to-one relationship can be created? How one-to-one relationship can be created? Okay, so this is simply, this is one-to-one. So suppose you are having two tables like this. If any doubt, then you can ask, you can interrupt me. Okay, no problem. So suppose one table is like this. One table, you are having one table, and its name is, suppose this customer table. Customer table is there, and another table is there. Customer table are having fields like this: customer ID, suppose CID, customer ID, customer name, suppose, and then order ID, because customer can place order. Customers can place order. Okay, and another table you are having order table. Order table, and suppose order table we are having fields like this: order ID, and then order name, like this: order ID and order name. These two fields are there. Now in customer table, this customer ID is the primary key. Primary key, you know na? Primary key, this will be asked as in theory exam. What are primary key? What is foreign key? These terms will be asked in the theory exam. So you must be aware of that. Primary key means a field or set of columns which can uniquely identify each record in the table. That is called primary key. So customer ID, suppose it is primary key, because no two customer will have the same ID. Okay, so that customer ID can be taken as a primary key.
Now in this table, suppose order ID is the primary key. This is the primary key. Okay. So if you are doing this, if there is a condition, that what condition means, one order, देखो, every order will be unique. Suppose this is O1, then O2, this is the order ID, and suppose this is O3, these are the order ID. So every order will be placed by a particular customer, isn't it? Every order will be placed by a particular customer, right? And suppose there is a condition that no two customer or no customer can give two different orders. Suppose this is a condition. First condition, what I am telling, first is that first condition is that every order will be given by a customer. Means kya? What I am telling that one customer can give one order, and another thing that one order will be given by only one customer. That is the thing. Means both way one is there. One customer can give only one order, and one order can be given by only one customer. So that is the condition. So here from this side it is 1, and from this side it is 1. So if you are creating that type of relationship between them, then it will become one-to-one relationship. Okay. So for one-to-one relationship, what you have to do, this is table 1 and this is table 2. So if you are creating one-to-one relationship between, if you want to create a one-to-one relationship between these two, then what you have to do, take the primary key of this table and take the primary key of this table. Then only one-to-one relationship can be created. Primary key of both the table. Means what is there? Order will be unique and customer will be also unique. Then relation established between these two will be also one-to-one relationship, because both the side primary key is involved. Okay. Now let us see how to create this. We have opened here. So I have already created the table. This you see, this is customer table. CUST is our customer table, and this is our order table. Let me open this in edit mode. So if you have opened the table, you can see here what different fields are there in the customer table. So in this table we are having customer ID, CID, its type is this, customer name, and then address. Three fields are there: customer ID, customer name, and then address. Okay. So these are the fields. Okay. Now close it. And one very important thing you have to keep in mind, that the fields on which you are creating the relationship between two tables, in both the tables the type of the field should match. Okay, then only you can create the relationship between them. Okay, so here you see CID is having type char. Okay, so now let us close this. This is customer table. Close this table. Now let me open order ID. So order ID, right click and then click on edit. Sir. Order ID, first field is order ID, its type is text. Then next one is DT. DT suppose date, so its type is date. And then another one is customer ID, that is this text fixed. Okay, so these are the fields available in order table. Okay, so now let us close this. So we have closed the tables. Now see the steps for creating the relationship. Very important. What you have to do for creating relationship, first of all you have to click on tools. See, we have opened, we are at present we are in the tables
in the left pane, in the right side, you can see tables are there, then queries are there, then forms are there, and then reports are there. So right now we have selected table. Okay, so these are the tables. Now we are going to create relationship between, suppose, customer and order table. So for creating relationship between two tables, what you have to do, click on tools. So click on tools, then click on relationship. At the top it is relationship is there, then click on relationship. Okay, so let me first delete these things. They were present before. So how we will bring them, I will tell you. Let me first delete all of them. Okay, so now it is okay. So what we have to do, once again, let me open. What you have to do, click on tools, then click on relationship. So here we have got this one. Okay, so as you click on this, what will happen, this window will be there, and now you have to select. See here in your database what different tables are there. All the tables will be listed here. See what different tables are there. Course is there, then cust is there, then department is there, then imp is there, then order is there, then a student is there, then a study is there. These many different tables are there. So now from this list you have to select two tables between which you are going to create the relationship. So अभी हम लोग किस टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करने वाले हैं, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में. सो कस्टमर को ले लो, कस्टमर को सेलेक्ट करो एंड ऐड करो. सो नाउ यू सी कस्टमर इज हियर प्रेजेंट. नाउ सेलेक्ट द सेकेंड टेबल ऑर्डर and then click on add. So order table will also be added. Now what you have to do, you can select them and you can move here and there. You can move them अपार्ट, इधर उधर आप कर सकते हैं, और इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं, ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं. सो ऑल द फील्ड्स आर विजिबल, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू रीसाइज देम. अगर इसमें फील्ड ज़्यादा होता तो आप इसको धर की इसको पकड़ के ऐसे आप खींच करके बड़ा भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से. So we are going to create relationship between customer and order. So for that reason we have taken these two tables. We have taken these two tables here. We have selected these two tables. Now the next thing is that we are going to create relationship between them. Okay. So now you see both the table. What is the primary key in customer table? Customer ID. Customer ID, right. And what is the primary key in the order table? Order ID. OID, that is primary key. So what just now what we have learned, if you are involving primary key from both the tables, okay, keep it in mind, or you can note down the point. If primary key from both the tables are involved in the relationship, then that relation will be one-to-one relationship. Very important point, you have to note it down. What I told, if primary key from both the tables are involved in the relationship, then the relationship will be, which type of relationship will be? One-to-one. One-to-one relationship, right? Okay. So we have selected these two tables. Now we are going to create the relationship. So for creating the relationship, what you can do, click on insert or click on insert here, and then you see here new relation is there. So click on that new relation. So now this window is there, this dialog box is there. Okay. Now see here in this drop down, you can see the tables that we have selected for creating relationships. So customer and order, because we are going to create relationship between customer and order, so only these two tables will be visible here. Okay, so in this left side we here we have selected customer, and here it is already selected order, but you can change. Suppose here you are selecting order, then by automatically here it will be customer, because these two tables are there between which we are going to create the relationship. Okay, so up to this point no problem. Now what you have to do, now come to this
two tables are there, order and customer, between which we are going to create the relationship. Okay, so what field from order table and what field from customer table you are going to keep. Okay, so यहाँ पे first let us take customer and then second order. So accordingly here they will be visible. First table is now customer and second table is order. So we are going to create relationship. We are going to involve these both from both the table. We are going to involve primary key only. Okay, so select this. Now what are the different fields that will be visible here? Customer ID, customer name and address. So let us select customer ID and then click here and then select order ID. So what we have done, we have selected primary key from both the tables. Okay, now simply here you click OK. So now you see, can you see the bonding between these two these two tables? बॉन्डिंग दिख रहा है आपको? Yes, और मैं sir. बड़ा कर देता हूँ, ये लाइन दिख रहा है ना? Yes, sir. So and what is written here? What is written here? 1. And what is written here? Both side 1 1. So this is 1 to 1 relationship. Okay, this is 1 to 1 relationship. Got the things? How to create 1 to 1 relationship and what is 1 to 1 relationship, and for creating 1 to 1 relationship what fields we have to select from the different tables. Is it clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now once you have created the relationship, what you can do, if you want to remove the relationship, simply what you can do, select the line. Bring your mouse there and select the line. Now you see the line has been selected. Okay. Simply what you do, right click and then delete. The bonding has been deleted. Relationship has been deleted. Okay. 1 minute. आप लोग wait करो. जूनी, पानी दो तो एक बार. So in this way what we can do, we can delete the relationship. Created relationship can be deleted. ठीक है. So once again let me create the relationship. So you can create the relationship in this way also. गर्म पानी नहीं है. You can create relationship by just selecting the field from the first table and dragging it to the field on of the second table, like this. Means you want to create relationship between CID and OID, so you can select from here, select this one and drag the mouse like this and bring it here and leave it. So like this also the relationship can be created. One, how to create? First method I told you, what you have to do, click on insert, then click on relationship, and then you see here both the tables are selected. Now you have to select the fields, which field you want to involve. So customer ID here I have selected, and from this I want to select order ID and then simply click OK. Then the relationship will be created. So like this only we have to create other relationship also. So here it is 1 to 1 relationship. Now let us see 1 to many relationship. So for that what you have to do, for that what you can do, when 1 to many relationship if you want to create, then suppose these two tables are there. This concept must be clear to all of you. This is T1 and this is T2. Two tables are there. Okay. Now in this table T1, suppose this F is primary key, and in this table T2, suppose this F2 is the primary key. Okay, and now what happens, this F2 is also a column in this
F2 is also a column in this. Okay, so here one question is there, means this F2 is from T2. This F2 in T1 table is from T2 table. So in T1 table, what this F2 is called? Are you listening, Richik? Yes, sir. Yes, Ah, sir. okay. So let me know what I am asking here. T1 is a table. Okay, T1 is a table, and T2 is another table. Today that second portion will not be completed. Okay, no problem. We will go slowly because the things have to be learned by you. Okay, so T1 is having a field, suppose F1, and it is working as a primary key in this, and T2 is having a field F2 and it is working as a primary key in this T2, and in T1 table, uh, F2 of T1 F2 of T1 is T2 is also present. So question is that what this F2 is called in T1? What this F2 is called? Foreign key. Yes, yes, good. Foreign key, right. Got all of you? Foreign key? So, because all the value, because this F2 is not a native key in this T1. F2 is coming from the different table. So, it is not, this is not the country of, means we can say T1 is not the country of F2. Which country it belongs to? It belongs to T2. सो ये अभी फॉरेन में आया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन की. ऐसे भी आप सोच सकते हो. टी जो F2 है T1 का नेटिव की नहीं है, T1 का कोई कॉलम नहीं है, इसमें जो भी वैल्यू आ रहा है कहाँ से आ रहा है, विदेश से आ रहा है. सो इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस जहाँ पे वो अभी जहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं उस टेबल में उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो in order to create one-to-many relationship, what you have to do, you have to combine one side, ये जो ऐसे T1 है ना, एक T1 है आपका और इधर T2 है, तो आपको क्या करना है कि एक तरफ का जो है सो आपका प्राइमरी की होगा और एक तरफ का होगा फॉरेन की. देखो वन टू वन रिलेशनशिप में कौन सा फील्ड इन्वॉल्व था, दोनों टेबल का प्राइमरी की, ठीक है ना. लेकिन वन टू मेनी रिलेशनशिप में क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, वन साइड प्राइमरी की एंड अनदर साइड foreign key, right. So very important point you have to keep in mind or you can note down. Okay, if one primary key and another foreign key is involved, then the relationship, which type of relationship will be there, that will be one to many or many to one. Okay, relationship will be there, right. So that is what we are going to create now. So let us open this one, and this we have done. Okay, so now let us close, let us select another table, suppose we want to create relationship between employee and department. So let us take employee table we have taken, bring it here, employee table, and another table we are going to take department, employee and department. Okay, these two tables we are going to create relationship between these two tables, employee table and department table. So let me elaborate the things. So employee table, in emp table we are having fields like suppose employee ID, then employee name and the department in which they are working. These fields are there, suppose. Okay. Oh, तो ड्राइंग गड़बड़ हो जा रहा है, देख. What different fields are there? Employee ID, employee name and department. 3 fields are there. And in department table we are having fields like
fields like this: department ID, department name, and location. Okay. Now let me discuss primary key here. In department table, this department ID is the primary key. This department ID is the primary key, and in imp table, this imp ID is primary key. So what this department is here, DEPT, इस field को क्या बोलेंगे? As Richie told just now, it is foreign key because ये जो है सो प्राइम, यहाँ पे कोई की नहीं है, यहाँ पे ये किस दूसरे टेबल का प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट, है ना. अच्छा, यहाँ पे DID लिखा है तो यहाँ पे DID लिख दो, तब आपका सही हो जाएगा. DID मान लो लिख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. दिस इज DID, सपोज DID. So this DID is what? DID is coming from this department table. This DID is the primary key of another table, and all the values in this DID is coming from here. All the values are coming from there. So this is foreign key. Got the thing? Yes. Okay. So if you are connecting, if you want to connect these two tables, if you want to relate these two tables, so what you will do, you can combine this DID with this DID. This relationship can be there. Okay, ठीक है ना. So ये जो टेबल है आपका, मान लो कि ये आपका imp टेबल है, इसमें आपका एक फील्ड है आपका DID, और दूसरा टेबल है आपका डिपार्टमेंट टेबल है, एंड इसमें भी एक फील्ड है आपका DID. सो अब आप क्या करने जा रहे हो, इस DID को इस DID के साथ लिंक कर दिया. तो इधर में DID जो है, यहाँ पे DID है प्राइमरी की, और यहाँ पे DID जो है इंप टेबल में DID जो है सो फॉरेन की है. ओके, सो व्हाट विल हैपन, जिधर में फॉरेन की है, बिकॉज प्राइमरी की में वैल्यू रिपीट नहीं होना है. प्राइमरी की नो रिपीटिशन कैन बी देयर, वैल्यू, all the values will be unique here because here it is primary key, but here it is foreign key, so here values can be repeated, so what it means, here it will be n and here it will be 1, here it will be n and here it will be 1. So this relationship is one to many relationship. This side department side 1 and employee side many. So इसका मतलब क्या हो गया कि in a department there can be many employees. This relationship tells us that in a department there can be many employees. Got all of you? Is it clear to all of you? Yes, sir. So how to create that? So अभी तो दिखा दिया यहाँ पे, अब उसी को हम लोग वहां पे कर लेंगे. ठीक है, so अब ओपन करो इसको. So two tables we have taken, imp and department. Okay, now let us create the relationship. So what we are going to involve? So first of all, what we will do, click on insert, then click new relationship. So we have got this one. So what different tables are there? Because now in this span we have taken 4 tables, so 4 tables will be available here. Dekho. See, these tables are there and department is already there here. Okay, so all these tables are there. So what we have to do, we have to select the tables which we are going to use for relationship. So first table is our imp table. So we have taken imp, and in the next box we have taken department already. So what we are going to do, from imp side we are going to take department, that is foreign key. Okay, so here we will select department, and in the department again we will select department, DEPT. Okay, so in imp DEPT is foreign key, but in department DEPT is primary key. So one side we have selected foreign key and one side we have selected primary key. So the relationship is going to be, it is one to many relationship. Okay, so after that you click simply OK. So you can see the bonding. Here it is written n and here it is written 1. सबको दिख रहा है तो
एक साइड 1 है, एक साइड n है। इसका मतलब क्या हो गया कि इधर से इम्प्लाई साइड से n हो गया, यानी कि n नंबर ऑफ इम्प्लाई कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट। n नंबर ऑफ इम्प्लाई कैन वर्क इन वन डिपार्टमेंट। इज इट ओके? Yes, sir. सो अब इसको हम लोग मेनी टू वन बोलेंगे। अब मान लो कि इसका हम साइड चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन टू मेनी हो जाएगा। डिपार्टमेंट को हम लोग रखते हैं इधर में और इम्प्लाई को इधर में रख देते हैं, तो अब क्या हो गया, वन टू मेनी हो गया। इधर डिपार्टमेंट इधर रख दिया, इम्प्लॉय इधर रख दिया, तो यहाँ वन टू मेनी हो गया। डिपार्टमेंट अगर इधर रख देंगे, इम को उठा करके इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेनी टू वन हो जाएगा। सिंपल, ठीक है। इसको आप कहीं भी ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ we can create one to many relationship or many to one relationship. So the main thing is that for creating one to many relationship is that from one table we have to select primary key and from another table we have to select foreign key. दूसरा कंडीशन क्या है कि दोनों फील्ड, दोनों टेबल में जिस फील्ड को आप इन्वॉल्व कर रहे हो रिलेशनशिप में, उनका टाइप एंड साइज सेम होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि उनका डेटा टाइप और उनका साइज भी सेम होना चाहिए दोनों टेबल में। जैसे कि इंप टेबल में जो डिपार्टमेंट फील्ड को हमने इन्वॉल्व किया और डिपार्टमेंट टेबल में भी डिपार्टमेंट फील्ड को इन्वॉल्व किया, सो इन बोथ दिस टू टेबल्स डिपार्टमेंट फील्ड का जो साइज है और टाइप है दोनों सेम रहना चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि इसका ए रीजन, ए मतलब ए कंडीशन क्यों है, क्योंकि जो आपका जो इंप टेबल में जो डिपार्टमेंट फील्ड है उसमें वैल्यू, सारा वैल्यू कहाँ से आना है, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट टेबल से वैल्यू आना है। इसमें कोई नया वैल्यू एंट्री आप नहीं कर सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखे थे ना, इसमें यू कैनॉट एंटर a new value in the foreign key. All the value, whatever value you are entering in the foreign key, all the value must exist in the primary key to which it is linked, है ना। मीन्स कि इसमें आप कोई नया वैल्यू नहीं डाल सकते, सारा वैल्यू इसमें होगा, वही वैल्यू आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज मीन्स का कहने का मतलब कि दोनों टेबल में आपका डेटा टाइप उस फील्ड का सेम होना चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है जी। सो लाइक दिस वी कैन क्रिएट वन टू वन रिलेशनशिप एंड देन वन टू मेनी रिलेशनशिप। सो नाउ कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ अनदर वन टू मेनी रिलेशनशिप दैट वी कैन क्रिएट। कोई भी दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताओ ऐसा जहां पे वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे मान लो टीचर और स्टूडेंट है, टीचर एंड स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में हम एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, है ना। टीचर टीचेज मेनी स्टूडेंट्स, टीचर टीचेज मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो उसमें अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है तो कैसा रिलेशनशिप होगा, वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. ओके। सो अब हम लोग देखते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप उतना मतलब इम्पॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट आपको फिर भी समझना है हाउ टू क्रिएट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो देखो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में आपको क्या है, बोथ साइड से फॉरेन की होना चाहिए, बोथ साइड से फॉरेन की इन्वॉल्व हो। मीन्स इसमें आपका कहने का मतलब कि दो टेबल के बीच में डायरेक्ट आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक अनदर थर्ड टेबल you have to take, and then only in between these three tables you will be able to create many to many relationship. Okay, how it will be created, let me first explain it. Suppose you are having one table like this, one table is there. लास्ट क्लास में भी बताया था, मान लो कि स्टूडेंट नाम का टेबल है आपका, ठीक है। और स्टूडेंट में जो है सो आपका फील्ड जो है इस तरह का है। अब मान लो रोल है आपका, फिर नेम है,
और जो स्टूडेंट जो कोर्स पढ़ता है मान लो वो कोर्स है, कोर्स आईडी, ठीक है, कोर्स आईडी, कुछ कोर्स करता है उसका कोर्स आईडी। ड्राइंग गड़बड़ हो जा रहा है बार बार, ठीक है। और एक टेबल है आपका कोर्स नाम का टेबल है, कोर्स। सो कोर्स में आपका क्या क्या फील्ड है, एक तो है कोर्स आईडी है, कोर्स आईडी। जैसे एक कॉलेज होता है तो उसमें बहुत सारा कोर्स होते हैं, बहुत सारा कोर्सेज चलता है ना। बीटेक है, बीसीए है, एमसीए है, एमबीए है, सो मेनी कोर्सेज आर देयर। सो सपोज वो जो कॉलेज है उसका एक कोर्स टेबल मेंटेन करता है जिसमें कि कोर्स आईडी, कोर्स नेम भी है, नेम फील्ड है, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम, दिस फील्ड है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनेगा आप इसको ऐसे देख सकते हो कि मान लो कि एक क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि अ कोर्स कैन बी टेकन बाय मेनी स्टूडेंट। इट इज ट्रू, एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। जैसे मान लो आपके स्कूल में आर्ट्स पढ़ने वाले, so many students are there, a course can be taken by many students। सेकेंड आपका होगा, सेकेंड होगा मान लो a student can take many courses। ये दो कंडीशन है। what are the 2 points? A course can be taken by many students and a student can take many courses। मान लो कि एक स्टूडेंट ऐसा है एट द टाइम एट ए टाइम वो एमबीए भी कर रहा है, एमसीए भी कर रहा है, 2 कोर्स में ले लिया। सो ठीक है, फ्रीडम, अगर ऐसा रूल्स है तो यस ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक रिलेशंस। सो अब यहाँ पे देखो क्या है, दोनों साइड से मेनी मेनी हो गया ना। A student can take many courses or a student can take many courses and a course can be taken by many students। So both side many is there। Okay, so अगर इनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा वो कैसा बनेगा, M:N रिलेशनशिप, M:N, many to many, ऐसा वाला रिलेशनशिप आपका बनेगा, ठीक है। सो इसको बनाने के लिए आपको क्या, आप डायरेक्ट इसको आप ऐसे दोनों टेबल में से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक और जो रिलेशनशिप इसमें है उसको, उसका भी एक आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो मान लो कि आप रिलेशनशिप के लिए जो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, स्टूडेंट स्टडी, स्टडी नाम का कोई रिलेशनशिप आपने बना लिया। यहाँ पे है आपका स्टडी, स्टडी। तो स्टडी में आपका मान लो कि स्टडी, ये जो रिलेशनशिप है इसको भी आप एक टेबल के रूप में मान लो रिप्रेजेंट कर रहे हो स्टडी को, और उस टेबल में आपका फील्ड है कोर्स आईडी एंड देन मान लो है रोल आपका है एंड कोर्स आईडी। सो देखो यहाँ पे ये जो टेबल है आपका, इधर रोल नंबर इज द प्राइमरी की एंड हियर कोर्स आईडी इज द प्राइमरी की। सो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि इस टेबल में जो स्टडी टेबल है हमारा, स्टडी टेबल में रोल और कस्टमर आईडी क्या ट्रीट होगा, उनको क्या हम बोलेंगे, कौन सा आईडी, कौन सा की बोलेंगे। बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स ना, in different tables they are working as a primary key। roll number is working as a primary key in a student table, customer course id is working as a primary key in course table। So both of them are coming from different table, so here in this table both of them will be treated as a foreign key। So in a table there can be more than one foreign key, but in a table there can be at most one primary key। एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Again, in one table there can be at most one primary key, but in a table there can be more than one primary foreign key। foreign key एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे कि इस टेबल में देखो ये भी foreign key है, ये भी foreign key है।
Is it okay? So what you have to do, you have to create relationship between these two tables via this third table, means a course, and from here to here like this. These two tables will be linked via this third table. Okay, so यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, a student can take many courses, a student can take many courses. So मान लो कि इधर में आप जो बना रहे हो roll and roll, roll and roll. So roll and roll. So here it will be roll will be 1 because in this table it is primary key, and here this roll can be many. So यहाँ पे आपका हो जाएगा n. So 1:n रिलेशनशिप यहाँ पे बना, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, फॉरेन की है. सो यहाँ पे हो जाएगा आपका n, और यहाँ पे प्राइमरी की है तो 1 हो गया. सो 1:n. सो इन दोनों मिल करके आपको क्या हो गया, वो जो मेनी टू मेनी कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेगा. ठीक है, यानी कि अब क्या हो गया कि अ स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्सेज एंड एट द सेम टाइम अ कोर्स कैन बी टेकन बाय मेनी स्टूडेंट. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट दैट थिंग. ठीक है ना, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास टेबल में पहले टाइम सेव करने के लिए पहले से टेबल बना के रखा है. एक टेबल है कोर्स. सो लेट अस ऐड दिस वन, कोर्स टेबल. सो कोर्स टेबल आई हैव टेकन हियर, लेट अस कीप इट हियर. देन स्टूडेंट टेबल. सो लेट अस टेक इट, स्टूडेंट टेबल. इसको लेफ्ट राइट इधर से रखो, यहाँ पे स्टूडेंट रख रहे हैं, यहाँ पे कोर्स को रख रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद स्टडी टेबल. स्टडी टेबल को आप बीच में रख दो. स्टडी टेबल में क्या क्या है आपका देखो, रोल है एंड कस्टमर कोर्स आईडी है, रोल आईडी एंड कोर्स आईडी इज देयर. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू in order to create the relationship between these two course, student and course, because we are going to create many to many relationship. क्यों, देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि क्या कंडीशन है, क्या कांस्टेंट है. जो कंप्यूटर साइंस जो यार ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक्चुअली इट इज नॉट नेचुरल. वी व्हाट एवर थिंग्स वी डू हियर, वी आर डूइंग टू सॉल्व आवर लाइफ्स प्रॉब्लम. हम लोग अपना जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को वर्क करते हैं. तो ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी है कि वहाँ पे भाई कोर्स लॉन्च किया और उसने बोल दिया कि ओके वी आर अलाउइंग आवर स्टूडेंट टू टेक मेनी कोर्सेस एट ए टाइम. ये रूल दे दिया. एंड ये तो रहता ही है कि एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट नहीं रहता है, तब तो यूनिवर्सिटी का भट्टा बैठ जाएगा, डूब जाएगा. एक कोर्स में तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं ना, जितना ज़्यादा आएगा उनको फायदा होगा, कॉलेज को फायदा होगा. तो इन वन कोर्स मेनी स्टूडेंट्स आर अलाउड, इट इज ऑफ कोर्स, इट इज श्योर. बट उसने ऐसा भी कर दिया कि आवर स्टूडेंट कैन टेक मेनी कोर्सेस एट ए टाइम. तो अब जो रूल उसने लाया, तो उस रूल को सॉफ्टवेयर में लाने के लिए क्या करें, सॉफ्टवेयर में इसका सॉल्यूशन है क्या, we can create many to many relationship in order to solve that problem, है ना. सो उसमें डेटा एंट्री, एक्चुअली हम लोग जो डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस का मकसद क्या है, टू कीप द डेटा एंड टू मेंटेन द डेटा, है ना. टू स्टोर डेटा एंड टू मेंटेन द डेटा, मेंटेन करना है, ऑप्टिमाइज करना है, सो दैट एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए और मैनेजर को चाहे जो भी है वो उसको आसानी से डेटा रिलेटेड जो भी डेटा चाहिए उसको मिल जाए आसानी से. ठीक है, तो एक्चुअली हमारा दिमाग में हम क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर जो भी करते हैं उसको बनाते हैं, सो दैट इट विल हेल्प अस, है ना. तो इसलिए हम लोग करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ले लिए टेबल इस तरह से. अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टडी. ठीक है, स्टूडेंट एंड स्टडी. तो स्टूडेंट एंड स्टडी के बीच में हम लोग रिलेशनशिप बनाएंगे, और फिर उसके बाद बनाएंगे कोर्स आईडी एंड दिस स्टडी के बीच में, कोर्स एंड स्टडी के बीच में. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप या तो डायरेक्ट यहाँ से आप जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड बताया हो उसको कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट एंड देन क्लिक ऑन न्यू रिलेशन एंड देन सेलेक्ट
Here from here you can select our first table is a student, so let us select a student, and second table is a study, so select a study. So this we have selected, and select from there one side primary key and another side फॉरेन की रोल नंबर, बोथ यहाँ पे रोल नंबर फॉरेन की है, ठीक है। सो रोल नंबर आप अगर कस्टमर आईडी कोर्स आईडी सेलेक्ट कर देंगे तो हो सकता है कि डेटा का मिसमैच हो जाए आपका, सो रिलेशनशिप कैन नॉट बी क्रिएटेड। और एक प्री कंडीशन क्या बताया कि इन बोथ द टेबल्स द डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द fields which are going to be involved in the relationship must be same, then only relationship can be created. Okay, so after this you click OK. So you see here 1 to n relationship has been created, ठीक है, 1 to n relationship has been created. So this we have done. Now the second relationship we have to create between this and this. So click again, insert and new relationship. So this time we have to involve these two tables, a study table and then course table, study and course. Click on that, select the field from the study, so course ID, and then here course ID. So course ID in course table, course ID is the primary key, but in a study table course ID is the foreign key. So one side primary key, one side foreign key. So again it will be created as one to many relationship. So here you see many to one relationship, like this we have created. So altogether this is working as a many to many relationship.